In science we are reading chapter, this is chapter 6, motion and time. Okay, so we have read about what is rest and what is motion. Today let us come to another topic, and in page number 82, that is motion. All motion is relative. Okay, all motion is relative. कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, किसी के लिए मोशन में है लग सकता है, लेकिन दूसरा किसी के लिए वो रेस्ट में भी लग सकता है, ठीक है ना। ए बॉडी टू समबॉडी, a body may be, it may, to someone, a body may be at rest, but to some other it may be in motion. Okay, so it is relative term. It is a relative term. It can be, it can only be expressed by making comparison with somebody else or something else or something other in the environment. It is important, देखो, it is important to realize that all motion is relative. देखो relative कैसे ना, a given object may be regarded as being at rest by one observer. हाँ, कोई किसी को रेस्ट में लग सकता है, एंड एज बीइंग इन मोशन बाय अनदर ऑब्जर्वर, और दूसरा उसी चीज को दूसरा कोई देखेगा तो वो उसको महसूस हो सकता है कि ये मोशन में है। तो एक के लिए रेस्ट लग रहा है, दूसरा के लिए, दूसरा ऑब्जर्वर या दूसरा जो कोई देख रहा है उसके लिए मोशन में लगता है, एक ही चीज। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, टू पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए मूविंग ट्रेन। सो कि तुम्हारा तो दोस्त, तुम जा रहे हो ट्रेन में, और दोनों दोस्त एक ही सीट में बैठे हुए हो, ठीक है। टू पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। आपस में दोनों क्या सोचेगा, हम दोनों तो रेस्ट में है, ठीक है ना। आपस में दोनों दोस्त सोचे, क्यों, दोनों दोस्त का तो तब सटा हुआ बैठा हुआ है, हाँ, कोई मूवमेंट नहीं है। तो एक दूसरे को जब ताक रहा तो लग रहा है कि या तो एक के सापेक्ष में दूसरा बैठा, हाँ, रेस्ट में है, दूसरा भी वही फील करेगा, है ना। सो दे विल फील with respect to each other they are at rest, with respect to each other they will feel that they are at rest, है ना। अपने अपने आप महसूस क्या करेगा, आपस में जब कंपेयर करेगा तो रेस्ट लगेगा। however they are in motion, they are both in motion with respect to a person standing outside the platform, लेकिन जो आदमी प्लेटफॉर्म में है, हाँ, बाहर है, और वो क्या महसूस करेगा, that both the passengers are in motion, you are in motion as because the train is in motion। लेकिन तुम सब आपस में जब कंपेयर कर रहे हो, है ना, when you are comparing with relative to each other, you are at rest, but in relation to somebody else who is at the platform or at outside the train, है ना, we will be the passengers will be in motion। okay, देखो, तुम अपने आप को रेस्ट में सोच रहे हो, दूसरा कोई देख रहा तो उसको मोशन लग रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव, है ना। दैट इट इज नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी, है ना। इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस टू रेफरेंस। अच्छा, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट व्हाइल सिटिंग इन ए ट्रेन standing on the platform you suddenly feel that your train has started moving? Have you ever experienced that while sitting in a train or standing in a platform you suddenly feel that your train has started moving? कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा ट्रेन खड़ा है स्टेशन में, है ना, लेकिन एक ठो और दूसरा ट्रेन घुस गया। तो दूसरा ट्रेन को देखोगे अगर, तो ऐसा ही और सडनली घुस गया है, तो दूसरा ट्रेन जो इन किया, यानी दूसरा ट्रैक में आ गया, उसको देख के ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा ट्रेन चलना शुरू कर दिया है क्या नहीं। लेकिन वही देखो, तो तुमको एक ट्रेन के सापेक्ष में कैसे क्या लग रहा है, दैट योर ट्रेन हैज स्टार्टेड, बट इफ विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म तरफ देखोगे तब तुमको असली चीज पता चलेगा, अरे ये तो नहीं हिल रहा है, ये तो नहीं हो जाए। प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट, एंड विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म योर ट्रेन वाज आल्सो एट रेस्ट, सो इट इज नॉट इन मोशन। But suddenly when a train enters from opposite direction, that train passes, okay, that train moves, and that is why there is change in position, there is, and you feel that there is change in position of your train, and hence you are in motion। तो इसी तरह से, है ना, एक दूसरा ट्रेन के सापेक्ष में तुम्हारा ट्रेन को लगेगा कि ट्रेन इज इन मोशन, बट विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म you will see that your train is at rest। So this happens when another train on a neighboring track crosses your train। देखो, नेबरिंग ट्रैक में जब दूसरा ट्रेन आएगा तो तुमको लगेगा तुम्हारा वो ट्रेन जा, एक्चुअली जब जो ट्रेन घुसा वो जा रहा है, लेकिन तुमको लगेगा कि तुम्हारा ट्रेन स्टार्ट कर दिया। क्यों ना, वो जो हम देख रहे हैं, है ना, बॉडी जो चेंज, पोजीशन चेंज हो रहा है ना। दूसरा ट्रेन जो आया है उसका तो वो तो मोशन में है, पोजीशन चेंज हो रहा है ना। जैसे कि अगर ट्रेन में हम सब जाते हैं, बाहर वाला लगता है बाहर वाला पीछे दौड़ रहा है,
वैसा ही हम सबको भी महसूस होता है। एक ट्रेन जब आगे जाता है तो हम सबको लगता है हम सब पीछे जा रहे हैं। Thus the decision, thus the decision about a given object state of rest or motion depends on very much on the observer and the surroundings chosen. So rest और motion किस पर निर्भर होगा? They will depend on the observer and the surrounding chosen. ठीक है, observer कौन है, कहाँ है, उस पर निर्भर होगा। We have already discussed in class 6 that objects may move in a straight line or may follow a circular or curved path. This they may also rotate, oscillate or vibrate. So this is all about various types of motion. In class 6 we have read rectilinear motion or linear motion, then circular motion, then we have got about rotatory motion, we have got read oscillatory motion, then vibratory motion. These are various types. Rectilinear motion क्या है ना? Straight line motion of a body is called rectilinear motion. If a body moves over a circular path, then it is called circular motion. And if a body moves in a curved path, okay, then it will be, the body will be moving in curvilinear motion. Suppose oscillatory motion, if a body moves to and fro, आगे गया फिर पीछे आया, आगे पीछे घूमते रहेगा, है ना, तो निश्चित दूरी तय करके, that will be oscillatory motion. वाइब्रेटरी मोशन, जब एक ही पोजीशन में रह के आगे पीछे मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव, एक ही पोजीशन में रह के, है ना, दिस इज द फिंगर, इट इज गोइंग डाउन एंड गोइंग अप, देखो इधर और इधर, हाँ, मूव होगा एक ही पोजीशन में रह के, देन दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो तार है ना, वो वाइब्रेट करता है तो ऊपर नीचे जाता है ना, तार तो वही है, बीच में पोजीशन में रहता है, उससे ऊपर उससे नीचे। सो पोजीशन ऑफ रेस्ट से ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, that is called vibration. Acha. So this is all about your types of motion and vibration. Now let us come to motion along a straight line. Motion along a straight line, yani rectilinear motion. The simplest type of motion is motion along a straight line, that is called linear motion. For example, motion of a train on a straight track. सोचो कि रेल लाइन सीधा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर होगा, तब उसको उस ट्रेन का मोशन भी क्या बोलेंगे? Rectilinear motion. Then the motion of the train will be rectilinear motion. Yani train is moving in a straight line path. Of an apple falling from a tree, a hailstorm falling from the ground, falling on the ground, or the straight march past of soldier in a parade can all be taught as an example of motion in a straight line. जैसे कि बारिश गिरती है, कोई चीज आपको कोई फल गिरता है तो सीधा गिरता है नीचे, स्ट्रेट लाइन मोशन में। अगर हेल स्टॉर्म होता है, ऊपर से ओला गिरता है तो वो भी स्ट्रेट नीचे गिरता है। स्ट्रेट मार्च पास सोल्जर भी कभी कभी देखो मिलिट्री सब मार्च पास करता है, लेफ्ट राइट करके आगे बढ़ता है तो स्ट्रेट लाइन में रहता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, यानी दे आर मूविंग इन ए रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन पाथ। We realize that in all these cases the object concerned are moving along or nearly the straight path. We call all such motion as rectilinear or simply linear motion. So if a body moves over a straight line path, then the body is said to having rectilinear motion or straight line motion or simply linear motion. Okay, so describing straight line motion, अब देखो, just see the diagram. The car is here at the starting point when time is 0 minute. Okay, after 10 minutes the car has moved 60 meter, it has reached A, यानी it has covered 60 meter. After 20 minutes मतलब और 10 मिनट के बाद it has covered 20 minutes, है ना, it has come to 80 meter. Okay, in 20 minutes, at the time of 20 minutes it has come 80 meter, but in the first 10 minutes it has covered how much distance? 60 meter, and in the second gap of 10 minutes it has covered only 20 मीटर। देखो 60 एंड 20 हो गया, और थर्ड गैप ऑफ टाइम देखो इक्वल गैप टाइम लिया है 20 मिनट से 30 मिनट, यानी 10 मिनट्स डिफरेंस में अब कितना गया है? 80 टू 120, यानी 40 मीटर गया है। तो फर्स्ट 10 मिनट इंटरवल में वो गया है 60, सेकेंड 10 मिनट इंटरवल में गया है 20, एंड थर्ड 10 मिनट इंटरवल में गया है 40 मीटर। तो ये तो अलग, देखो समय सेम है and the time is equal, but the distance traveled by the car is different. So this type of motion is, it is just linear motion, but this is not uniform motion, it is non-uniform motion. तो देखो किताब में अब आगे देखो, we need to specify the motion of an object at different times to describe its motion along a straight path. Consider the motion of the car along a straight level road, सीधा रोड में जा रहा है,
and choose a point O as the point, as the point from where the car starts moving, O से start कर रहा है moving. This means that the car is at O dot at time t is equal to 0. तो 0 टाइम और स्टार्टिंग टाइम में 0 पर है. That A B C represent the position of the car at different instants of time. Different time में पोजीशन ये दिखाया गया है. ए में ए कब आया है 10 मिनट्स में, बी आने में 20 मिनट लगा, सी आने में 30 मिनट. ओके, बट दे हैव ट्रेवल्ड, इट हैज ट्रेवल्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट इन द सेम टाइम इंटरवल. 10 मिनट का इंटरवल है, उसमें अलग अलग दूरी जा रहा है. 60 मीटर, देन 20 मीटर, देन 40 मीटर. Okay, so in the first 10 minutes the car has moved O to A. The distance covered is 60 meter. In these first 10 minutes, in the next 10 minutes the car moved from A to B. Hence the distance covered is just only 20 meter. Okay, we can therefore say that the car speeded up in the time interval 0 to 10. तो 0 to 10 मिनट में कार का स्पीड ज़्यादा था. क्यों? वही समय में वो ज़्यादा दूरी तय किया, तो स्पीड ज़्यादा है. एंड स्लोअर डाउन इन द टाइम इंटरवल 10 to 20. और जब 10 से 20 मिनट में ट्रैवल ये टाइम in the second time gap of 10 minutes, it has moved only 20 meter. Okay, so its speed is less, and in the second time gap or time lap, the speed of the car is less. We thus realize that the change in the position of an object help us to decide how fast or slow its position is. So we thus realize that the change in the position of an object with respect to time help us to decide how fast or slow the motion of the car is or body is. Okay, so change देख रहे हैं, दूरी का चेंज कितना रहा, समय की कितना. ठीक है, अगर बराबर समय में ज्यादा दूरी तय हो रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा है. हाँ, अब वही बराबर समय में कम दूरी तय कर रहा है तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, होगा ना. सो वी आर कमिंग, सो from this vector we have come to learn about a new term in physics or science that is called speed. Okay, तो अब स्पीड, कोई बराबर समय में, देखो बराबर समय में जो ज्यादा दूरी जाएगा उसको स्पीड क्या बोलेंगे, उसका स्पीड ज्यादा होगा. हाँ, बराबर समय में सबसे कम जाएगा उसका स्पीड कम, सबसे कम दूरी जाएगा उसका स्पीड सबसे कम होगा. So we have come to learn another term, that is the speed. So we shall define speed in our next video. What is speed of a moving body? जो बॉडी मोशन में है उसका स्पीड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ज्यादा कब होगा, अगर कम समय में ज्यादा दूरी जा रहा है तो स्पीड ज्यादा बोलेंगे. ओके, और अगर ज्यादा समय में कम दूरी जा रहा है तो उसको स्पीड कम बोलेंगे. ठीक है, so speed help us to speed gives us an idea how fast the body is moving. Okay, so regarding speed I shall talk in our next